गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से इंटरनल कंबशन इंजन का टॉपिक कंप्रेसर। कंप्रेसर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ फॉर आईसी इंजन एंड पावर प्लांट। वी नो दैट स्टूडेंट्स विच इज एंड कंप्रेसर जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंडस्ट्री में, और कंप्रेसर के थ्रू ही बहुत सारे काम इंडस्ट्री में होते हैं। In industry, compressed air is so widely used that it is often regarded as the fourth utility after electricity, natural gas, and water. About 8 to 10% of all electrical power used in an industry is employed in the process of compressed air. Now we can start scope of work. एज शोन इन फिगर, आप जैसा कि डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये कंप्रेसर का डायग्राम है। आपको ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखने को मिला होगा। आप अपनी बाइक की सर्विस कराने या अपनी फोर व्हीलर कोई भी आपकी गाड़ी है उसकी सर्विस कराने जाते होंगे तो वहाँ पे इस तरह का कंप्रेसर आपको देखने को मिला होगा। वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्रेसर एंड देयर करेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि मेज़रमेंट में क्या है, यहाँ पे स्कोप, measurement of power consumption, free air delivery, operating pressure, isothermal power required and volumetric efficiency, measurement of inlet air temperature, effect of inlet air temperature on power consumption, assessment of specific power consumption, effect of following on energy consumption, dust in inlet air, dryness of inlet air, inlet and after cooler temperature and pressure, delivery pressure setting, size of pipe, fitting, cooking, pressure, drop, piping layout, etc. Now bend and fitting losses, effect of fitting of different type of size. Variable speed drive VED for compressor operation and its assessment. Compressor capacity assessment, capacity control method, method of system leak quantification, detail energy audit of a compressed air installation with actual case study. Now we can start introduction. Energy sources for operating requirement. Why compressed air? Properties that make it important, क्या इसकी प्रॉपर्टी हैं? Compressor and their working principle. Highlight of compressor industrial position. सभी पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, तो देखते हैं। नंबर फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है, एनर्जी सोर्सेज फॉर ऑपरेटिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। In today's world, many methods are employed to operate industrial tools and equipments to carry out the process work that these industrial perform, be it manufacturing industries, power plant, or process industries. There are always energy sources that act on the equipment, actuating them, the making them function. The commonly used sources are direct electricity, steam, water, industrial oils, compressed air. And now second point, why compressed air? Why compressed air? One of the major method of actuating of industrial machines is pneumatic actuation. आप डायग्राम देख पा रहे हैं, इस तरह के एयर कंप्रेसर का ये डायग्राम है। जो एयर कंप्रेसर हमारी इस तरह से कंप्रेस करके कंप्रेसर एयर को हमें कंप्रेस होती है और इसे हम यूज़ में लेते हैं। इट इज़ नथिंग बट एयर एट ए प्रेशर हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. It has been widely used as an energy source for operating simple to equipments in mechanical, chemical, and other process industries. Even through air is the most abundant natural resources on the planet. Compressed air is one of the most expensive of service to provide. The following properties of compressed air justify
Why it's such an important energy sources? Elastic nature, non-toxicity, low viscosity, no appreciable corrosion natural nature. And now third point we discuss compressor and their working principle. Compressor and their working principle. An air compressor is basically a device that converts power usually from an electric motor, a diesel engine or a gasoline engine into kinetic energy by compressing and pressurizing air. यानी कि जनरल फॉर्म में हम कहेंगे कि एन एयर कंप्रेसर इज ए बेसिकली ए डिवाइस दैट कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी बाय कंप्रेसिंग एंड pressurizing air. Okay, this compressed air can be stored or can be released in quick burst on demand. एज शोन इन डायग्राम, आप डायग्राम में देख रहे हैं किस तरह से एयर एंटर करती है और कंप्रेसर हमारा इस तरह से नीचे से क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टिंग होता है, कनेक्टिंग रोड, और जो पिस्टन के थ्रू सक्शन करके एयर को सक्शन करता है और वो बाहर की तरफ एग्जॉस्ट ले लेते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है। कंप्रेसर जो है इस तरह से हम वर्किंग में लेते हैं। कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज, ideal gas law states that if for any state of an ideal gas, we know that P equal to mRT, where P equal to absolute pressure of gas, V volume occupied by the gas, T absolute temperature of gas, M amount of sustain present in. Therefore, to increase pressure of gas on, one has to either decrease the volume it occupies or increase its temperature or both invariably. Compression of air create heat and the air is warmer after compression. As shown in figure ए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर, इस कंप्रेशर में यहाँ पे एयर सक्शन हो रही है डाउनवर्ड पोर्शन से और डिस्चार्ज अपवर्ड पोर्शन में हो रही है थ्रू पिस्टन। पिस्टन कनेक्टेड टू कनेक्टिंग रोड एंड कनेक्टिंग रोड इज कनेक्ट टू क्रैंक विच ऑपरेट बाय क्रैंक शाफ्ट कनेक्टेड टू मेन पावर ऑफ इंजन विच थ्रू इट ऑपरेट। क्रैंक शाफ्ट जो सक्शन वाल ओपन होती है और कंप्रेस होती है एयर, जिसके थ्रू ऊपर जो ओपन होती है हमारी डिस्चार्ज वाल ओपन होने के साथ एयर ऊपर डिस्चार्ज हो जाती है। नेक्स्ट जो है देयर आर 3 वे इन विच ए CAC सिस्टम कैन डील विद द हीट। एयर स्टोरेज कैन बी एडियाबैटिक, डायबैटिक और आइसोथर्मल। Adiabatic storage continues to keep the heat produced by compression and returns it to the air when the air is expanded to generate power. Diabatic storage dissipate much of heat of compression and intercoolers, thus approaching isothermal compression into the atmosphere as waste, essentially wasting thereby the renewable energy used to perform the work of compression. Isothermal compression and expansion approach attempt to many operating temperature by constant heat exchange to the environment. They are only practical for low power levels without very effective heat exchanger. In industry, the positive displacement and air compressor of work on the diabatic storage of energy and work by forcing air into a chamber whose volume is subsequently decreased to compress the air. They are classified as reciprocating and rotary depending on how the air is guided into the chamber. वी नो दैट यहाँ पे यूज होती है इस कंप्रेशन जो प्रोसेस है, यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन का भी यूज हो जाता है कभी कभी, जो क्या है यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस इन मोशन इंक्रीज द कोस्ट ऑफ इट्स वेलोसिटी व्हेन इट फ्लो अक्रॉस ए डक्ट। द प्रिंसिपल इज एम्प्लॉयड इन डायनामिक
compressor which use centrifugal force generated by spinning impellers to accumulate and then distillate computed air which pressurize it. बर्नौली इक्वेशन यूज होती है यहाँ पे. एंड नाउ वी डिस्कस टाइप्स ऑफ कंप्रेशर. टाइप्स ऑफ कंप्रेशर में सबसे पहले पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशर आते हैं. इसमें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर, रोटरी कंप्रेशर, डायनामिक कंप्रेशर. डायनामिक कंप्रेशर में आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर और एक्सियल कंप्रेशर आता है. इस तरह के जो एयर कंप्रेशर हैं यहाँ पे इंडस्ट्री में यूज होते हैं. एयर कंप्रेशर आर यूज्ड इन ए वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर ऑपरेटिंग मशीनरी लाइक हैमर presses and supplying process requirement and supplying air at high pressure for chemical action के लिए. Along the industry pneumatic work air compressor are also used to produce compressed air in the vehicle propulsion, energy storage, scuba diving, air brake, animation propulsion. Air compressor are machines with very low overall efficiency. Only 10 to 30% of energy supplied to the compressor reach the point of end use. The remaining power is converted to unusable heat energy and to a smaller extent is lost in friction, mouses and noise. These factors are need to identified and minimize for optimum perform. Depending on the number of compression stage, there are single stage और मल्टी स्टेज कंप्रेसर है. ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. आई होप आपको इतना समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.